Hello, genius brains. Here I am, your friend Prajita, with your English reader language Odyssey, class 5 by Amit Publishing House, and this book is by Acknowledged series. So children, let's do something new today. Are you all ready to start with a new chapter with me? So here we start with chapter 10, and the chapter is I Can't Go Out. Let's see what's there in this chapter. So let's find out about the story first. हम पहले इस story में क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं. This lesson tells about Jaydeen who lived on a vineyard in Nasik, Maharashtra. Nasik is in Maharashtra. ये जयदीन के बारे में बता रहे हैं. इस स्टोरी में बताया गया है जो कि कहाँ रहता था, विनयार्ड में रहता था, नासिक में. There were many fruit trees. Many types of birds also came on trees to eat the fruits. जहाँ वो रहता था वहाँ बहुत सारे तरह तरह के पेड़ थे और बहुत तरह की बर्ड्स आती थी वहाँ पे, उस ट्री पे बैठती थी जहाँ बहुत तरह के फ्रूट्स लगते थे उस फ्रूट को खाने के लिए. One day his father decided to cut the tree. What happens then? Let's read the story. एक दिन उसके जयदीन के फादर ने डिसाइड किया कि पेड़ को काट देंगे और उसके बाद क्या हुआ? Let's read here. It's in a form of a play. So the characters are here. Who are the characters in this? Madhav, watchman, physician, Sudha, Amal, Madhav's adopted child. माधव ने एक चाइल्ड अडॉप्ट किया था, उसका नाम था अमल. अ ग्रुप ऑफ बॉयज. नाउ माधव्स हाउस, माधव के घर का सीन है ये. फिजिशियन, द पेशेंट नीड्स द मोर स्क्रप्युलस केयर. स्क्रप्युलस केयर मीन्स बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है. एक फिजिशियन है वहाँ पे, डॉक्टर, एंड पेशेंट है, तो पेशेंट के लिए क्या बोल रहे हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने की ज़रूरत है. माधव, आई अंडरस्टैंड बट टेल मी व्हाट शुड आई डू. अब माधव बोलता है मुझे समझ में आ रहा है लेकिन मैं क्या करूं, और बताइए आप. फिजिशियन, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन नो अकाउंट मस्ट ही बी लेट आउट ऑफ डोर्स. व्हाट डज फिजिशियन से, कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि किसी भी कीमत पे ये बाहर नहीं जाना चाहिए, दरवाजे से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. माधव, पुअर चाइल्ड, इट इज वेरी हार्ड टू कीप हिम इनडोर्स ऑल डे लॉन्ग. फिजिशियन, वेल आई मस्ट बी गोइंग नाउ. द फिजिशियन लीव्स द रूम. अमल एंटर्स. नाउ व्हाट हैपेंड? माधव सेज, ओहो, ये बच्चा कैसे रह पाएगा पूरा दिन घर के अंदर बिना बाहर, एक भी बार बाहर न जाके कैसे रह पाएगा. तो फिजिशियन कहता है चलो अब मैं चलता हूँ, एंड द फिजिशियन लीव्स और अमल अंदर आता है जो कि माधव का अडॉप्टेड चाइल्ड है. माधव, नो माय डियर, नो. माधव किसको बोलता है ये? अमल, सी देयर वेयर आंटी ग्राइंड्स लिंटल्स द स्क्विरल इज सिटिंग विद हिज टेल अप एंड विद हिज वी हैंड्स, very small hands, he is picking up the broken grains of lentils and crunching them. Can't I run up there? अब अमल क्या बोलता है? अमल जो अडॉप्टेड चाइल्ड है कि वहाँ देखो आंटी क्या कर रही हैं, कुछ दालें पीस रही हैं, और जो स्क्विरल है वो बैठी है अपना टेल अप करके और छोटे छोटे हाथों से वो जो ब्रोकन लेंटिल्स है उनको चबा चबा के खा रही है. क्रंचिंग. क्या मैं वहाँ नहीं जा सकता? माधव, नो माय डार्लिंग, नो. अब ये जो फिजिशियन ने जिस बच्चे के बारे में बोला कि बाहर नहीं जा सकता, वो कौन था? वो अमल था. अमल के बारे में ही बोला था. अमल, आई विश आई वर अ स्क्विरल. आई वुड बी लवली, इट वुड बी लवली. अंकल, व्हाई वोंट यू लेट मी गो आउट. अब अमल कहता है काश मैं एक गिलहरी होता और कितना अच्छा होता. तो अंकल क्या मैं बाहर नहीं जा सकता थोड़ी देर के लिए? Now what happened next? Madhav, doctor says it's bad for you to be out. I am off to work, but you won't go out, will you?
अब माधव अमल से बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते हैं और मैं अब अपने काम पे जा रहा हूँ और आप बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। क्या आप जाएंगे? अमल, नो आई वॉन्ट, बट अंकल प्लीज लेट मी बी इन दिस रूम बाय द रोड साइड। अमल बोलता है कि नहीं अंकल मैं नहीं जाऊँगा बाहर, लेकिन मुझे प्लीज़ इस वाले रूम में रहने दीजिए जिससे कि विंडो से रोड दिखती है। रोड साइड वाला जो रूम है वहाँ पे मुझे रहने दीजिए। माधव लीव्स द रूम। अमल इज सिटिंग बाय द विंडो इन हिज रूम। अब देखो अमल अपने रूम में है जहाँ पे एक विंडो है रोड साइड पे, वहीं पे अपने रूम में बैठा है अंदर। अ वॉचमैन एंटर्स, ही पासिस बाय अमल्स विंडो। एक वॉचमैन अमल के विंडो के सामने से जाता है। अमल, there's the watchman on his rounds. Watchman, I say, come and have word with me. अब अमल देखता है वो वॉचमैन आया है तो वॉचमैन को बुला के कहता है वॉचमैन आओ मेरे साथ बातें करो। वॉचमैन, aren't you afraid of the lights of me? It's looks of me. Looks of me मतलब क्या आप मुझे देख के डरते नहीं हो? अमल, no, why should I be? अमल कहेगा क्यों, मुझे क्यों डर लगेगा आपको देखकर? Watchman, suppose I march you out straight to the king. Suppose करो, वॉचमैन कहता है कि मैं तुम्हें straight away किंग के पास ले जाऊं अगर। अमल, to the king? Do, will you? But the doctor won't let me go out. No one can ever take me away. I have got to stay here all day long. अमल कहता है किंग के पास नहीं, आप मुझे नहीं ले जा सकते क्योंकि डॉक्टर ने मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए मना किया है, मुझे कोई भी यहाँ से बाहर नहीं लेके जा सकता। वॉचमैन, डॉक्टर वोंट लेट यू आउट, पुअर फेलो। सो आई सी योर फेस इज पेल एंड देयर आर डार्क रिंग्स अराउंड योर आईज, योर वेन्स स्टिक आउट फ्रॉम योर पुअर थिन हैंड्स। वॉचमैन कहता है ओह डॉक्टर आपको नहीं बाहर, डॉक्टर ने बोला है बाहर नहीं जाने के लिए, तो आपका फेस बिल्कुल पेल है मतलब वाइट हो गया है, वीक हो गया है। पेल मीन्स वीक एंड डार्क रिंग्स हैं आपके आईज के चारों तरफ और आपकी जो वेन्स है वो पतली सी थिन से जो आपका हैंड है उसमें से आपकी वेन्स दिखाई दे रही हैं। अमल, वोंट यू साउंड द गॉन्ग वॉचमैन? व्हाट्स द गॉन्ग चिल्ड्रन? सी दिस इज द गॉन्ग, ये होता है गॉन्ग। वॉचमैन के हाथ में होता है ना जिसे घंटा बोलते हैं, उसको बजाता है वो, इससे एक हैमर टाइप चीज़ होती है उससे वो बजाता है एंड रात को पहरेदारी करता है, तो इसे कहते हैं गॉन्ग। सो अमल ने क्या पूछा वॉचमैन से कि क्या आप वो गॉन्ग नहीं बजाएंगे? आई लव टू हियर योर गॉन्ग, टेल मी व्हाई डज योर गॉन्ग साउंड। अब वो वॉचमैन से बोलता है आप बजाइए ना वो गॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसकी आवाज़ सुनना, और टेल मी व्हाई डज योर गॉन्ग साउंड, आपका ये गॉन्ग क्यों साउंड करता है? वॉचमैन, माई गॉन्ग साउंड्स टू टेल पीपल दैट टाइम वेट्स फॉर नन बट गोज ऑन फॉरएवर। वॉचमैन क्या बोलता है अमल को कि मेरा गॉन्ग आवाज़ करके ये बताता है लोगों को कि टाइम कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है, वो हमेशा चलता रहता है। अमल, वेयर टू विच लैंड? वॉचमैन, नो वन नोज। अमल बोलता है कहाँ जाता है टाइम, कौन सी धरती पे जाता है, कौन सी लैंड पे जाता है? तो वॉचमैन कहता है किसी को कुछ नहीं पता। अमल, से व्हाट्स गोइंग ऑन देयर इन दैट बिग हाउस ऑन द अदर साइड that has a flag flying high up and people always going in and out. अब अमल उस वॉचमैन से ही पूछता है क्योंकि वो तो बाहर जा नहीं सकता था, उस वॉचमैन से पूछता है कि अब आप मुझे ये बताओ जो दूसरी तरफ एक बड़ा सा घर सा दिखाई दे रहा है और एक फ्लैग है, बहुत ऊंचा एक फ्लैग लगा हुआ है और लोग हमेशा वहाँ पे अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे? वॉचमैन, ओह देयर, दैट्स अ न्यू पोस्ट ऑफिस। वॉचमैन कहता है वो तो हमारा नया पोस्ट ऑफिस है। अमल, पोस्ट ऑफिस? हुज, किसका? वॉचमैन, हुज, व्हाई, द किंग्स ऑफ कोर्स। कहता है वॉचमैन कहता है किसका मतलब? वो तो किंग का ही पोस्ट ऑफिस है, हमारे राजा का पोस्ट ऑफिस। अमल, डू लेटर्स कम फ्रॉम द किंग टू दिस ऑफिस हियर। अब अमल देखो कितने क्वेश्चंस करता है वॉचमैन से कि क्या
वॉचमैन क्या राजा के यहाँ से लेटर्स आते हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, राजा की चिट्ठियाँ आती हैं यहाँ। वॉचमैन, ऑफ कोर्स, वन फाइन डे देयर मे बी अ लेटर फॉर यू इन देयर। वॉचमैन क्या कहता है कि हो सकता है एक दिन आपके नाम का भी कोई लेटर आए। अमल, बट हु विल फेच द किंग्स लेटर टू मी व्हेन इट कम्स। अब अमल क्या बोलता है कि मेरे लिए वो लेटर कौन लेके आएगा वहां से, अगर कोई लेटर आता है मेरे लिए। वॉचमैन, पोस्टमैन, इंडीड। रेन और शाइन, रिच और पुअर, फ्रॉम हाउस टू हाउस डिलीवरिंग लेटर्स, दैट्स ग्रेट वर्क। वॉचमैन कहता है कौन लाएगा, पोस्टमैन लाएगा। पोस्टमैन लाता है लेटर, और चाहे वो बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे वो गरीब का घर हो या अमीर का घर हो, कुछ भी हो, पोस्टमैन हमेशा घर घर जाकर लेटर डिलीवर करता है। There's the village headman. I must be off. If he catches me gossiping with you, there'll be a great to do. Now, अब उस वॉचमैन को विलेज हेड दिखाई देता है, तो वो कहता है कि वहाँ विलेज हेड खड़ा है, अब मुझे जाना होगा। अगर उसने मुझे आप तुम्हारे साथ बात करते हुए देख लिया तो फिर ठीक नहीं होगा। द वॉचमैन वॉक्स अवे क्विकली। वॉचमैन चला जाता है। अमल, हु आर यू वॉकिंग देयर? हाउ योर एंकलेट्स टिंकल। डू स्टॉप अ व्हाइल डियर, वोंट यू? अ गर्ल एंटर्स। अब एक गर्ल चलती हुई आती है, उसके एंकलेट जो पायल होती है, पायल को एंकलेट बोलते हैं, वो टिंकलिंग साउंड करती है, आवाज़ होती है उसमें। और अमल क्या बोलता है, कौन हो तुम, थोड़ी देर रुको। तुम नहीं रुकोगी थोड़ी देर? गर्ल, आई हैवंट अ मोमेंट टू स्पेयर, इट इज ऑलरेडी लेट। दैट गर्ल सेज, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ। अमल, आई सी यू डोंट विश टू स्टॉप, आई डोंट केयर टू स्टे ऑन here either. Girl, you make me think of some late star of the morning. What's the matter with you? अब अमल कहता है, मत रुको तुम, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। वो गर्ल कहती है, मुझे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? What's the matter with you? अमल, I don't know. The doctor won't let me out. डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने से मना किया है, मुझे नहीं पता क्यों। Girl, me. Don't then. You should listen to the doctor. People will be cross with you if you are naughty. I know. Sitting by the window all the time must make you feel tired. Let me close the window a bit for you. Now the girl says, girl कहती है, फिर तो तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। मुझे पता है कि सारा दिन विंडो पे बैठे रहने से कितना टायरिंग होता है और बोरिंग भी होता है। चलो मैं तुम्हारा विंडो थोड़ा सा बंद कर देती हूँ। Amal, no, don't. This is the only one that's open. All the others are shut. But will you tell me who are you? I don't seem to know you. अमल बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, यही एक विंडो है जो खुली हुई है, बाकी सारी बंद हैं। लेकिन तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। गर्ल, आई एम सुधा, द डॉटर ऑफ द फ्लावर सेलर हियर। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम सुधा है और मैं जो फ्लावर बेचते हैं यहाँ पे उनकी डॉटर हूँ। अमल, व्हाट डू यू डू? सुधा, आई गैदर फ्लावर्स इन माई बास्केट। मैं फ्लावर्स इकट्ठे करती हूँ अपने बास्केट में। अमल, ओह, फ्लावर गैदरिंग, दैट इज वाई योर फीट सीम सो ग्लैड एंड योर एंकलेट्स jingle merrily as you walk. Wish I could be out too. Then I would pick some flowers for you from the very topmost branches. Now what Amal says, अच्छा तुम flowers gather करते हो, तभी तुम्हारी जो anklets हैं, पायल है, इतनी खुशी से टिंकल करती रहती हैं, वो खुश रहती हैं, हमेशा तुम इधर उधर घूमती रहती हो, फ्लावर्स तोड़ने जाती हो। विश मैं भी बाहर होता और मैं भी बाहर आ पाता और तुम्हारे लिए ऊंची ऊंची ब्रांचेस से फ्लावर्स तोड़कर ला सकता। सुधा, I wish I could remain at home like you. Then I could play with my doll, Binay and Minnie, the pussy cat. But I say it's getting late and I mustn't stop or I won't find a single flower. Now this girl Sudha says कि I wish कि मैं तुम्हारी तरह अंदर रह पाती
क्योंकि फिर मैं क्या होता वहाँ पे अपनी डॉल के साथ खेलती, अपनी पुसी कैट के साथ खेल पाती। लेकिन अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं अगर और लेट करूँगी तो मुझे एक भी फ्लावर नहीं मिलेगा। अमल, ओह वेट अ लिटिल लॉन्गर, आई डू लाइक इट सो। अमल फिर उसको रोकता है। सुधा, बी गुड एंड सिट स्टिल एंड ऑन माई वे होम आई कम एंड टॉक टू यू। सुधा कहती है अभी अच्छे बच्चों की तरह अंदर बैठो और मैं वापस जब आऊंगी तब तुमसे बात करूंगी। अमल, यू वॉन्ट फॉरगेट मी विल यू? आई एम अमल, रिमेंबर दैट। अमल कहता है तुम भूल तो नहीं जाओगी, मेरा नाम अमल है, क्या तुम याद रखोगी मुझे? सुधा, आई वॉन्ट फॉरगेट यू, यूल सी। सुधा रन्स अवे। सुधा को लेट हो रहा था तो सुधा ने बोला मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी तुम्हें, और सुधा वहाँ से चली जाती है। अ ट्रूप ऑफ बॉयज एंटर, अब कुछ बॉयज वहाँ आते हैं। अमल, से ब्रदर्स वेयर आर यू ऑफ टू, स्टॉप हियर अ लिटिल। अब उन बॉयज को देखकर अमल फिर से बोलता है ब्रदर्स आप कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर रुको यहाँ पर। बॉयज, वी आर ऑफ टू प्ले, हम खेलने जा रहे हैं। अमल, what will you play brothers? Boys will play at being plowmen. तो वो पूछता है उन बच्चों से, बॉयज से कि ब्रदर्स तुम लोग क्या खेलोगे, भाई लोग तुम लोग क्या खेलोगे? तो वो बॉयज बोलते हैं कि हम प्लोमैन बनेंगे, प्लो जो फील्ड्स को प्लो करते हैं, हम उनकी तरह बन के खेलेंगे। फर्स्ट बॉय शोइंग अ स्टिक, दिस इज आवर प्लोशेयर। एक स्टिक दिखाता है कि ये हमारा प्लोशेयर जिससे हम खेत जोतते हैं जिससे। सेकेंड बॉय, वी टू आर द पेयर ऑफ ऑक्सन। अब जो कौन किसी को जोतते हैं, बैल जो होते हैं वो उसके पीछे वो प्लाउशेयर लगाया जाता है, तो दो बच्चे बैल बनते हैं उसमें। बॉयज, कम आउट टू प्ले विद अस, वोंट यू? अब वो बॉयज कहते हैं अमल को कि आओ बाहर आओ, हमारे साथ खेलने आओ। अमल, the doctor won't let me out. Why not play on the road near this window? I could watch you then. अमल बोलता है कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है बाहर आने से, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि यहीं विंडो के सामने मेरे खेलो तो मैं भी देखूंगा। थर्ड बॉय, what can we play with here? यहाँ वो कहता है यहाँ हम क्या खेल सकते हैं? अमल, with all these toys of mine, here you are, have them. I can't play alone. They are lying about getting dirty and are of no use to me. अमल कहता है यहाँ आप मेरे टॉयज के साथ खेल सकते हो जो कि ऐसे ही पड़े हुए, मैं अकेला नहीं खेल सकता इनसे, आप सब मिलके खेलो। बॉयज, हाउ जॉली, व्हाट फाइन टॉयज, एंड यू विल लेट अस हैव देम ऑल, यू डोंट रियली माइंड। अब वो बॉयज बहुत खुश होते हैं, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर टॉयज हैं, क्या तुम हमें दोगे खेलने के लिए? अमल, नो नॉट अ बिट, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँ। कहते तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर हम खेलेंगे इससे? तो अमल से, नो नॉट अ बिट, हैव देम बाय ऑल मीन्स, बट विल यू प्ले विद देम इन फ्रंट ऑफ आवर डोर फॉर अ व्हाइल एवरी मॉर्निंग? अमल कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगे, बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा, आप सब मेरे टॉयज से खेलो, लेकिन रोज क्या तुम मेरे दरवाजे के सामने आके डेली मॉर्निंग में खेल सकते हो? आई एम अफ्रेड, आई एम स्लीपी, आई डोंट नो, आई फील लाइक दिस एट टाइम्स, आई हैव बीन सिटिंग अ लॉन्ग वाइल एंड आई एम टायर्ड, माई बैक एक्स, आई हैव अ बैक एक बिकॉज मैं बहुत लंबे टाइम तक बैठा हुआ हूँ, अभी मैं बहुत लंबे टाइम से बैठा हुआ हूँ, मेरी पीठ में दर्द हो गया है और मैं टायर्ड हो गया हूँ, आई एम फीलिंग स्लीपी ऑल्सो। बॉयज, वी हैड बेटर गो देन, विल कम अगेन टुमारो मॉर्निंग। बॉयज कहते हैं ठीक है हम अभी जाते हैं, हम कल मॉर्निंग में फिर से आएंगे और तब खेलेंगे। एंड दिस हैज बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। So children, look how that child was getting bored in the house, inside the house, because he had been told by the doctor कि आप बाहर नहीं जाएंगे खेलने के लिए। So he stops each and every person passing by, वहाँ से जो भी जा रहा था उसको रोक के वो उनके साथ
बातें कर रहा था और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि यही जो भी करना है मेरे विंडो के सामने खेलो। उन बॉयज से उसने रिक्वेस्ट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमल। नाउ चिल्ड्रन, नो मोर, थोड़ा सा कुछ और भी पढ़ते हैं। फ्रीडम अलाउज पीपल टू मेक चॉइसेस दैट दे आर प्राउड ऑफ. दिस मेक्स देम हैप्पियर बिकॉज दे नो दे हैव अर्न्ड हैप्पीनेस थ्रू देयर फ्री विल. जो फ्रीडम होता है ना, फ्रीडम सबको पसंद है, सबको फ्रीली काम करना पसंद है, फ्रीली खेलना पसंद है. अब अमल को क्यों परेशानी हो रही थी? क्योंकि उसको एक कमरे में अंदर बंद कर दिया गया था. He didn't had freedom to do anything, was just sit and watch. In a nutshell, क्या पढ़ा हमने इस लेसन में? The importance of freedom. Freedom कितना important है हम लोगों के लिए. A young boy who can't go outside to play. In this play we have read about a young boy Amal, जिसको कि बाहर जाने को मना किया था डॉक्टर ने और उसको घर के अंदर ही रह के अपना टाइम पास करना था. Now the testing time, children. Take the correct option. A new dash has opened near Amal's house. School, bank, post office, none of these. क्या खुला था अमल के घर के पास? एक नया post office. The watchman was a or an kind man, unkind man, imposter, none of these. That watchman was a kind man. Sudha was the daughter of the watchman, flower seller, king, or none of these. Sudha was the daughter of the flower seller. The troop of boys promised to sing a song, come again, dance every day, or none of these. They promised to come again the next morning. Fine, children? So further, read these lines from the play and answer the questions. We have to answer some questions. कुछ lines दी हुई हैं जो अभी हमने play में पढ़ी हैं. That is why your feet seem so glad and your anklets jingle merrily as you walk. Who is the speaker? किसने बोला था ये words? किसने बोले थे ये line? किसने बोली थी? Amal spoke these words. Who is your referred to? Your is referred to Sudha. Your means Sudha के anklets के बारे में बात कर रहे थे. Why does the speaker say it so? Speaker ने ऐसा क्यों बोला? अमल ने ऐसा क्यों बोला कि that's why your feet seem so glad and your because when Sudha was walking, her anklets were making a jingle sound and Sudha was free to move here and there. She used to go and collect flowers. So Amal said that your feet are free to go anywhere. That's why your anklets are so happy and making a jingle sound. They are lying about getting dirty and are of no use to me. Now, who is the speaker of these lines? Again, Amal is the speaker of these lines. Whom does the speaker say these words to? ये words वो किसे बोलता है? Boys. Boys को बोलता है ना कि मेरे toys ऐसे ही रखे हुए हैं, dirty हो रहे हैं. What does they refer to? They refer to the toys and are of no use to me. Why does the speaker say so? Explain. The speaker said so that they are of no use to me because the speaker was not allowed to go out of the house and there was no one to play with him. So he could not play with those toys alone. That's why he said they are of no use to me. Who said to whom? The next one. Ah, well, I must be going now. Who said and to whom? Who said this? The watchman. The watchman said to Amal. Okay? No, my dear, no. No, my dear. Oh, sorry.
Again. Who said to whom? Okay. These are some of the lines which have been said by somebody in the play. So here we will write who said and this side we will write to whom. किसने किसको कहा? Ah well, I must be going now. ये किसने बोला था? The doctor. Who said this? The doctor. And to whom did he say this? To Madhav. To Madhav. No, my dear, no. Who said? Madhav said this. To whom? To Amal. Suppose I march you out straight to the king. Who said this? The watchman. The watchman said this to Amal. I haven't a moment to spare. It is already late. Who said this? Sudha. Sudha ने बोला था ना कि मैं late हो रही हूँ. And Sudha ने किसको बोला? Sudha said this to Amal. Oh, wait a little longer. I do like it so. Who said this? किसने बोला ये? कि थोड़ी देर और रुको. Amal said this to Sudha. Fine, children? So here we complete these exercises. Now we come to the question answers. Answer the following questions. Who is Amal? Why wasn't he allowed to go out? Who is Amal? Amal is Madhav's adopted child. And why wasn't he allowed to go out? He wasn't allowed to go out because he was ill. He was not well. Why did the physician advise? What did the physician advise about Amal? The physician advised that he should not go out of the door. He should just sit inside the room and have his food and all properly. He was not allowed to go out. He was not advised to go outside, out of the house. What did the watchman tell Amal and about the big house on the other side? What did he tell? The watchman told that big house just in front of Amal's house is the new post office which has been built, and it is the king's post office. The letters come here. The letters from the king comes here. What wish did Amal make to be? What wish he made? He wished that. What wish did Amal make to be? He wished that someday he could also go out. He wished when he saw Sudha, when he heard that Sudha goes to pick flowers, he also wished that he could go out and pick some flowers with Sudha and reach out to the topmost branches and get the flowers for Sudha. Who was Sudha? Sudha was the flower seller's daughter. Who was Sudha? She was the flower seller's daughter. Okay? Now the last one. What did the boys want to play with? The boys wanted to play. What did the boys wanted to play with? They wanted to play with the plow stick and they wanted to act like the plowmen. Read the phrases with mind with their meanings. Okay? Use them into sentences of your own in your notebook. Now here are some of the phrases, children, and the meanings of those phrases are given here. Phrases के meanings दिए हुए हैं. आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आप इनको इनका सेंटेंस बनाएंगे. You will write it in your notebook. Just go through these meanings. I'll just read out. Presence of mind. इसका मतलब क्या होता है? To be able to remain cool and solve problems quickly in a difficult situation. अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा? Presence of mind का. When
The hunter saw the lion in front of him. He used his presence of mind and what he did? The hunter got out of that difficult situation. He used his presence of mind and got out of that difficult situation. Be in two minds to hesitate. दो तरह से सोचना means hesitate करना, किसी decision पे ना पहुंचना. Don't be in two minds when you have to solve any problem. कोई भी problem solve करने के लिए hesitate नहीं करना चाहिए, two minded नहीं होना चाहिए. Give a piece of one's mind to tell someone what is in his mind. Out of one's mind, to act without thinking sensibly. These are the meanings. आपको sentences अपने आप बनाने हैं. Cross one's mind, to come out of, to come to one's mind. Cross one's mind, to come to one's mind. Mind one's own business. Not to interfere in others' affairs and do one's own business. कहते हैं ना, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, माइंड योर ओन बिजनेस. मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, अपना काम देखो. सो प्लीज राइट डाउन दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. नाउ, given below is a dialogue between two friends. Read it and insert capital letters, full stops, commas and question marks wherever necessary. We have to do the punctuations here. Ravi, hi Jason. So the first mistake is this has to be in capital. देखो मैं यहाँ पे I don't have space, so I am just doing the corrections. But आपको अपने notebook में कैसे लिखना है? पूरा sentence correct करके लिखना है. I am just doing the corrections here. Hi Jason, I am back from my trip to the United States. देखो, this is the mistake. United States is the name of a country, so it has to be in capitals. United States. Fine. I am just back from my trip to the United States, comma, you won't believe where I went, full stop. अब ये सारा करेक्शन करके आपको फिर से ये सेंटेंस अपने नोटबुक में लिखना है. Jason, hi Ravi, H capital, hi, and Ravi is a name, so R capital. Hi Ravi, it's great to hear your voice again. So, where did you go? Question mark. Ravi, I capital. I went to Disney, D capital, Disney World in Florida, F capital, Florida, full stop. Jason, wow, W again, the first letter capital, W, O, W, wow. That's great. How was it? How was it? Question. So put a question mark. Ravi, simply wonderful again, S capital, simply wonderful. I capital, visited the theme park, comma, saw the castle, comma, met all the Disney characters and even, see Disney D capital, Disney characters and even saw their parade that evening, full stop. Jason, was it crowded, W capital, was it crowded, question mark. Ravi, very, V capital, very, since it was holiday time for the kids the park was crowded, comma, then I capital, I had to wait so long to even take pictures with the characters, comma, in fact, I missed some of them, full stop. Jason, but, B capital, but I capital, I am glad you visited it, full stop. Ravi, so, S capital, so am I capital, please, so am I. Please come over so I can share some of the photographs
with U, full stop. Jason, sure, S capital, S-U-R-E, sure. Why not? Comma. I'll be, I capital, be there next Saturday, S capital, Saturday, and the last full stop. Fine, children? So, this was the correction, this was the proper punctuation which we had used in these dialogues. Fine, children? So, here we complete our lesson, and I hope you all have had a good lesson of freedom, how freedom is necessary for everyone here. Every individual wants freedom. Without freedom of doing anything, without freedom of going anywhere, a person is not able to live properly. Freedom सबके लिए बहुत important है. So stay clamped for the next video. Stay connected. Till then, bye and stay blessed.